Hi dear students, how are you? I hope you all would be fine and shine. It is our fourth class of English grammar that we have started on GKLT, and this class we are going to talk about verb, its types, identification, importance, and gerund and infinitives, and also exercises. And inshallah, after watching this video, you will be clear about verb. So let's get started. What is a verb? A verb, from the Latin word verbium, meaning word, is part of speech that conveys an action, read, walk, write, etc. A occurrence, happen, become, or state of being, be, existed, stand. I would simply tell you in easy words that a verb is a word which shows action instead of someone or something. Verbs always express activity. Verb क्या होता है? ये आपके अमल को शो करता है, चाहे किसी चीज़ की भी अमल हो, एक बंदे की अमल हो, चाहे थ्रू एक्शन हो, फीलिंग्स हो, किसी चीज़ के ज़रिए से भी हो, तो वो वर्ब कहलाता है. जिस तरह के यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रीड, वॉक, राइट, एटसेट्रा. ये एक्शन हुआ, क्योंकि अगर आप देख ले तो इनमें हमारा बॉडी जो है एक्शन में आता है, एक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है. अगर occurrence देखें, if we look on occurrence, so happen, become, like these kind of verbs are known as occurrence, or a state of being, be, exist, stand. So इस सारे प्रोसीजर में जितने भी verbs आते हैं, इनको हम verb कहते हैं. For example, let's run to the corner and bake. So it's action. I know the answer. It's occurrence. I'm a student. State of being. So I hope you would have got that what is verb. Now the next one is identification of verb. We can identify verb in a sentence by the word that has an action or an occurrence or a state of being. For example, I washed the car. Bolt runs fast. I think Apridi is a good player. So washed is an action, you know. Run is an action, you know. And think, like now it's state. You think about something. So they are identification. How would we identify? Like I have given over there the definition. So simply you can identify the verb in a sentence. Now इनका importance क्या है? What is the importance of a verb? A verb is a main part of a sentence or a question in English. In fact, in every language, you can't have a sentence or a question complete without a verb. Where now after this we have used are, so it is like in every language we need a verb. Even if you think there is a language that doesn't have verb, so think that is not a language. Simply अगर आप सोचते कि एक लैंग्वेज मौजूद है लेकिन उनमें वर्ब नहीं है, सो आई थिंक वो लैंग्वेज ही नहीं है. गॉट इट? अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में. हमारे साथ the first one is action verb, the second one auxiliary or helping verb, stative verb, modal verbs, phrasal verb, regular verbs, irregular verbs, confusing verb. So now one by one we would be talking about it, and inshallah after watching this video you will be clear with all these things. लेकिन अगर आप चाहते कि वर्ब को आप बेसिक से एडवांस तक सीखे तो आपको ये वीडियो कंप्लीट तक देखनी पड़ेगी. अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकन बटन दैट यू गेट आवर लेटेस्ट वीडियो.
So the first one is action verb. According to a great philosopher, a mouth will say anything, but actions will tell everything. It was a saying. So action verbs are the words that express action like eat, write, drive, etc. Simple words में मैं आप लोगों को बताऊंगा. Like your body is involved in all those action, जिसमें आप की body involved हो. अगर हम देखें ईट खाते हैं तो अगर हम किस चीज़ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं. राइटिंग में कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है, हाथ. ड्राइव, so you can easily know that they are action verb where the body is involved in action. For example, the horse is running, John is riding a bike, and these sentences running and riding are the actions that are done by someone simply. So action verb, I think ये तो बहुत easy है. आप एक sentence में किस तरह identify करेंगे कि जी ये stative verb है या action verb है. So I think that is a piece of cake for everyone. So the next one that we have, it is an exercise you can yourself do, and it is easy, so you should just read it. I have written it. Identify action verb in each sentence. So यहाँ पर मैंने लिखे हैं और वहाँ पर मैंने कुछ examples भी दिए हैं, so it is easy for you. The next one, okay. Most action verbs are defined as transitive or intransitive verb. Now intransitive verb क्या है? अगर आपने active passive किए हुए हैं, so an active passive transitive and intransitive verbs play a vital role. If you don't know about active passive, so inshallah in this course I'll be teaching you active and passive with detail. So this means that some are used with a direct object, the person or a thing that receives the action of the object is called transitive verb, and others do not have a direct object and are called intransitive verb. Some verbs can be both transitive and intransitive depending on their meaning. यहाँ पर आगे हमारे साथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे तफसीलन में बात करूंगा. ट्रांजिटिव वर्ब अब क्या है? A transitive verb is an action verb that has a direct object. A direct object is a word that receives an action of the verb. For example, यहाँ पर मैंने कुछ examples दिए हुए हैं. Richard annoys his boss so much that he will never get a promotion. His boss is the direct object of annoys, and a promotion is the direct object of a get. Alright, this next one. Jenna brings Mrs. Smith lunch every day, and Mrs. Smith is direct object of brings. So Jenna is the subject. अब direct object transitive verb क्या है? जो कि सिंपली मैं आपको सिंपल कहूँगा कि that cannot stand alone. इनको ज़रूर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने करेगा. और a direct object is a word that receive a action of the verb. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, जो कि वर्ब का अमल रिसीव करता है. कोटेड यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप वही भी पढ़ सकते हैं. Now the identification of direct object, first way is that a word which receives the action of a verb is called direct object. Second way is what or whom test. To find out if a verb has a direct object is to identify the action verb, then ask the question what or whom. If there is answer to the question what or whom, then the action verb has a direct object. Is transitive. Example, Ali threw the ball. So यहाँ पर आप देखें who threw the ball. So Ali threw the ball. So यहाँ पर जो सेकंड हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि व्हाट एंड हुम का आप जहन में ये बात बिठा लें कि हम क्या करेंगे और किस तरह इस एक्शन वर्ब को आइडेंटिफाई करें और किस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप ख़ुद से पूछेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब में कि जी बॉल किसने फेंका, तो यहाँ पर हु, जब हु का क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर ज़रूर किसी का नाम तो लेंगे। सो यहाँ पर इनसे बखूबी अंदाज़ा किया जाता है कि हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब कैसे परफॉर्म होते हैं और कैसे सेंटेंस में लगते हैं और किस तरह हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। द सेकंड वन इज इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब अब क्या है? So intransitive verbs do not need a direct object. In order to complete their meaning, many are followed by adjective, adverb, preposition, or verb complement, gerund, or infinitive, for example. अच्छा जी. So intransitive verb simply they can stand alone. It itself convey a full meaning. It doesn't need to get direct object. For example, if Cathy continues to be late for work, the boss will fire her. Continuous is followed by an infinitive to be with no direct object. The bomb exploded in the city center. So यहाँ पर exploded is followed by a preposition of a place with no direct object. So यहाँ पर हमारे साथ कोई भी direct object नहीं है. So इसी तरह के क्या कहते हैं वर्ब को हम इंट्रांसिटिव कहते हैं। अब यू मस्ट मेक श्योर कि जब भी हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और उसमें हमारे साथ इंट्रांसिटिव वर्ब हो, सो दैट सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज। कीप इन माइंड इफ दैट इज एन एक्टिव एंड वी हैव इंट्रांसिटिव वर्ब इन दैट, सो दे कैन नॉट बी चेंज। ये बात आप समझ लें। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के, सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। Auxiliary verbs are used together with the main verb to show the verb's tense or to form a negative or a question. The most commonly used auxiliary verbs are have, be, and do. For example, does Sam write all his own reports? Terry is writing an email to a client. They are walking on the road. Do they come here? सो यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किए, या मैं कहता हूँ दे हैव गॉन, सो यहाँ पर हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब है, या दे हैड गॉन, हैड यहाँ पर है, और शी वॉज गोइंग होम, सो यहाँ पर वो जो है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। सो इसी तरह वर्ब जो होते हैं ये क्या करते हैं? वर्ब्स टेंस शो करते हैं और उनकी नेगेटिव क्वेश्चन को मेंशन करते हैं। आई थिंक दे आर इजी, सो मच इजी। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। यहाँ पर फिर मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन आप आंसर को ना देखते हुए ये ख़ुद कर ले, उनके बाद चेक कर ले कि क्या जो मैंने ये एक्सरसाइज किया ये ठीक है या नहीं। इनके बाद वी हैव स्टेटिव वर्ब्स। सो व्हाट are stative verbs? Stative verbs are the verbs that explain a state rather than an action. They usually relate to thoughts, emotion, relationships, senses, state of being, and measurements. जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था एक्शन वर्ब के बारे में कि एक्शन में बॉडी इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो है वो स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह के थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, सेंसेस होते हैं, तो उन्हीं की बात हम करेंगे। जिस तरह आई हैव गिवन सम एग्जांपल, पॉल फील्स रूटन टुडे, आवर क्लाइंट अप्रिशिएटेड ऑल द वर्क वी डिड फॉर हिम। सो ये क्या है? ये हमारे साथ स्टेटिव वर्ब हो गए। और फिर एक्सरसाइज जी, मॉडल वर्ब्स जो है इनको मैं आप लोगों
के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा. I will discuss all modal auxiliary and modal verbs in detail because they need to be discussed in detail, like could, would, should, may, might, must. So these all modal auxiliary verb are needed to be explained in detail. So one by one, inshallah, I would try to discuss it in my next video. यहाँ पर मैंने कुछ definition दिया हुआ है. A modal is a type of auxiliary helping verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation or necessity. So inshallah we would be discussing these all things in our later videos. Okay, so इनके बाद हमारे साथ आता है phrasal verb. It is also a type of verb. Get down. Most of the time phrasal verb are made of verb plus preposition, or preposition phrase that could be also said. So it has different meaning from the literal meaning. इनका जो मीनिंग होता है, phrasal verb का जो मीनिंग होता है, यह डिफरेंट होता है. Phrasal verb is a combination of words like a verb plus a preposition or a verb plus adverb that used together usually take on a different meaning to that of a original verb. जिस तरह मैंने कहा कि जो phrasal verb होते हैं, ये इनके साथ verb plus preposition आता है या verb plus adverb आता है. लेकिन सबसे important बात जो है, ये different meaning देता है अपने literal original meaning से. When we use phrasal verbs, we use them like normal verbs in a sentence. For example, Ella tore up the letter after she read it. Their car broke down 2 miles out of the town. So ये हमारे साथ हो गए phrasal verb. जिस तरह मैं आपको कहूँ कि give up. Give up. अगर मैं give का मतलब बता दूँ तो देना. Up mean ऊपर. लेकिन यहाँ पर ये phrasal verb है तो it means that leave. छोड़ना. Never give up. कभी भी मत छोड़ना. So again, exercise you have to do by yourself. Now, what are regular verbs and what are irregular verbs? Regular verbs, many English verbs are regular, which means that they form their different tenses according to established patterns. Such verb work like this: third person singular present tense, he, she laughs, laughed, laughed, and laughing. सिंपल इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म होता है या डी पे ख़त्म होता है, जिनके आखिर में डी आता है, तो उसे हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. लेकिन अगर वो सेकंड एंड थर्ड डिफरेंट होते हैं, वो फॉर्म डिफरेंट टेक ऑन करता है, तो फिर वो इरेगुलर वर्ब कहलाएंगे. आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश. So ये regular हो गया. John loves his dog. She hates you. Shakira eats bread at lunch. So ये सारे हमारे साथ regular verb हो गए. Irregular verbs. Irregular verbs are the words that do not take on regular d, ed or ied spelling patterns of the past simple. Irregular verbs are also known as strong verbs. इनको हम strong verbs भी कहते हैं. Irregular verbs को हम strong verbs भी कहते हैं. और ये d और ed और ied पे ख़त्म नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं. जिस तरह के मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट. एंड थर्ड फॉर्म गॉन. से सेड सेड. सी सा सीन. टेक टुक टेकन. नो न्यू नॉन. गेट गॉट गॉटन. थिंक थॉट थॉट. सो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, डी ई डी आई ई डी टेक ऑन नहीं करते, तो इसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. सो यहाँ पर फिर इनका जो एग्जांपल्स है वो मैंने दिए हैं. अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मॉडल एक्सिलरी है, द मॉडल एक्सिलरी एंड gerund and infinitives, I will teach you those all in another videos because they need to be discussed in detail. And यहाँ पर मैंने बहुत टाइम लिया, so I think it's enough for today. Inshallah, see you in next video. Allah Hafiz.